This award ceremony today makes an honest attempt to acknowledge the zeal and rigor of working women. Women always face bigger problems the moment she decides to work outside the home. Her challenges are different from men. Women are empowered. The only thing is that they need to be given opportunities. There's a lot happening behind her smile. Hard work, society pressure, family pressure, broken hearts, tired body, and the spirit of not giving up until they achieve their goal. A strong woman is a woman determined to do something others are determined not to be done. With this, I, Dr. Sneha Shamadar, welcome you all once again to the 6th Sarojini Naidu International Awards. My journey started from here. I've done a film production and direction course from AFT, which was an amazing experience. And then I was blessed and fortunate enough to write a biography on Sir, which is A Walk in the Corridors of Eternity. So that was amazing because हम किसी से इंस्पायर होते हैं किसी को इंस्पायर करने के लिए. तो मुझे तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली ट्रू जर्नी की, जैसे नोएडा, नो आइडिया, जो भी आपने सब कुछ सुना. So that is where my personality got shaped. I got a lot of confidence, got an amazing opportunity to interview more than 500 people who visit here every day with Sandeep sir and Sushil Bharti sir. So thank you. Thank you is a very less word for that. And today getting this award, Sarojini Naidu award, like I don't have words because यहाँ पे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इतना कुछ कर चुके हैं, एंड मेरी जर्नी तो भी शुरू ही हुई है. लाइक इट्स अ वॉक इन द कॉरिडोर्स ऑफ इटर्निटी. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई वांट टू डू अ लॉट मोर. सो आई एम अ राइटर फ्रॉम पास्ट 20 years एंड उसी से मैंने एक कैफ़े लॉन्च करा है बिकॉज आई शिफ्टेड टू देहरादून. सो वहाँ पे एक ऐसे यूरोपियन कंसेप्ट सेट करने की ट्राई करी है कि आर्टिस्ट होता है, उनका कैफ़े होता है, खुद ही कुकिंग होती है. And I'm promoting the values of Bhagavad Gita there. So no smoking, no boozing, purely vegetarian. Basically a hub to promote art and culture. So that is also an idea, entrepreneur idea, because Sandeep sir is an entrepreneur and we have to, being an artist and an entrepreneur and balancing that journey is a task. So still learning and trying to do much more. And जैसे कि women पे based award है, तो मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी शायरी की जो मैंने लिखी थी. दिल की आवाज़ कहती है, अर्ज किया है, मर्द वो नहीं जो औरत की आवाज़ को दबाए, मर्द वो नहीं जो औरत की आवाज़ को दबाए, असली मर्द तो वो है जो औरत को पंख दे जब वो उड़ना चाहे. So guys, we need to support each other because it's not about competition, it's about collaboration. And once we collaborate and understand the concept of Shiv and Shakti, world will be blessed. Thank you.